Well, the CBI charge sheet in the alleged NEET UG 2026 paper leak case has cited an expert analysis of the leaked material recovered from aspirants and alleged middlemen. According to the agency, the material was examined by an expert panel constituted by Delhi University, which found that a major portion of the recovered content matched 4 NEET UG 2026 paper sets, Kailash, Shivalik, Set 2 and 3. to varying degrees. Now, officials have said that the paper sets allegedly accessed by the accused expert showed the highest number of matches, reaching up to 85%, while the sets did not provide them the recorded, were in fact not the recorded sets that were submitted. Well, let me go across to Javed for more of this. Javed, ये जो सीबीआई की चार्ज शीट है, इसमें जब एनालिसिस किया गया तो 85% तक का मैच आ रहा था। एक जो पोर्शन रिकवर किया गया था 4 नीट यूजी पेपर सेट्स का, कैलाश, शिवालिक सेट 2 और 3 का। देखिए, कैलाश जो जिस तरीके से जो कोचिंग के ऑनर्स है, इसमें जो एक्सपर्ट के तौर पर है, जिनके तमाम नाम सामने है, इसमें जो तकरीबन 120 के अप्रॉक्स 122 के अप्रॉक्स जो है ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच किया है। और इसको जब फॉरेंसिक तौर पर पूरी तरीके से जांच हुई तो जो नीट में जो क्वेश्चंस आने थे जो 150 से 122 इसमें मैच किया है। यानी कि ये वो क्वेश्चंस है जो एनटीए से पूरी तरीके से जो लीक हुआ, क्योंकि देखिए सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई के द्वारा चार्जशीट जो दाखिल किया गया और जिस तरीके से कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में ये बताया गया कि नीट यूजी स्कैम, जो ये स्कैम हुआ, जो पेपर लीक किया गया, ये जो एक पूरा ये तैयारी थी, ये अभी की तैयारी नहीं थी, इसको बहुत पहले तैयार कर लिया गया था और इसमें सबके रोल को अलग अलग डिफाइन किया गया था। और अब जिस तरीके से देखिए हैंडराइटिंग के जरिए जो क्वेश्चंस पेपर को तैयार किया गया और जो क्वेश्चंस पेपर थे उसको वहां पे हैंडराइटिंग में लिखा गया। कुछ क्वेश्चंस अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन को पूरी तरीके से याद कर लिया। कुछ क्वेश्चन पेपर जो थे वो पूरी तरीके से जो गेस्ट पेपर्स होता था, उस गेस्ट पेपर्स के थ्रू उसमें उसको मैच किया गया, मिलान किया गया। जो 150 से 120 और 122 के करीब जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे मैच हो गया। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस पेपर थे अलग अलग एक्सपर्ट के तौर पर, अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर, और इसको जिस तरीके से फॉरेंसिक की मदद ली गई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई थी, सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। तो इसमें कई क्वेश्चंस पेपर्स, कई पीडीएफ और कई जो टेलीग्राम और कई व्हाट्सएप जो ग्रुप बने थे उससे भी ये मेल और मैच करता है। तो ऐसे में अब सीबीआई के पास और कई ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से नीट के इस पेपर को जो है लीक करने में एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि ये वो एक्सपर्ट हैं जो लातूर और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे, जिन्होंने अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, अपने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो ऑपरेट कर रहे थे, पूरी तरह से चला रहे थे। इसमें पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे जिन तक ये क्वेश्चंस पेपर पहुंचे और ये कई जो ग्रुप हैं के जरिए ये क्वेश्चंस पेपर वहां तक उन तक पहुंचाया गया। कुछ लोगों को बिचौलिए, मिडिलमैन के जरिए, ब्रोकर के जरिए क्वेश्चंस पेपर। We have some more breaking news. We'd like to address that first. The CBI has alleged major lapses in the NEET UG 2026 paper question paper preparation process at the NTA facility in Okhla, where allegedly this was exploited by accused subject experts. According to the charge sheet, paper setting, translation and back translation were carried out in a sanitized environment, but the accused allegedly used these opportunities to memorize and reconstruct the questions after returning to their hotel rooms. The agency has alleged that one of the accused used rough sheets and small chits to note down questions and later recreated them, while others relied on memory and marked questions in subject books. Well, the CBI has now claimed that the leaked material recovered during the probe showed the highest matches with the NEET paper sets handled by these experts, especially in chemistry. I believe my colleague Sambhav Sharma is also live with us. Sambhav, we'd like to get in your input as well on this, where the CBI has alleged that these were major lapses
around a lot of matches being found in the Okhla hub, where things were done under sanitized environment, but the subject matter experts still did manage to, memorize some questions. Some noted down chits, some noted down the questions in the question paper books. Well, absolutely. As my colleague Javed is breaking down the details of this prosecution complaint charge sheet filed by Central Bureau of Investigation in Delhi's Rouse Avenue Court. Equally important are the points which you have just mentioned. And obviously, the Central Bureau of Investigation is investigating this whole case. And remember, I just want to add on one more thing to it. When the Delhi's Rouse Avenue Court has in a way rejected bail petition of Dr. Manoj Sirure, who is one of the accused. There CBI has said something officially in the courtroom, and CBI has said that it was a criminal conspiracy and bail should not be granted. And at that time, while rejecting the bail petition in July, last week of July, the Rouse Avenue Court has rejected the bail petition of Dr. Manoj Sirure, and the CBI has called him one of the kingpins in the whole case, and he is one of the accused in total 13 accused arrested by the Central Bureau of Investigation. All are in jail in the judicial custody. So there, the Rouse Avenue Court has also talked about the impact it is created, the paper leak is created on the nation and the examination process as such. The credibility of the examination process as such, Honorable Judge has talked about that as well in his written order rejecting bail of Manoj Sirure, and also, as you pointed out, two more accused, Dinesh Vilal and one more. These two accused, they have requested for polygraphy test in this case. Their lawyer, AP Singh, Advocate AP Singh, has asked for polygraph test. Now it is to be seen. That case will also be decided on Monday, and Monday is going to be crucial in this whole case, because NEET UG paper leak case is a case which has not just grabbed the national headlines, but also took in a way the conscience of the students, and they have started up protesting on the roads, and one of the protests we saw at Jantar Mantar in the national capital. Absolutely. So, I thank both of you, Sambhav Sharma and Javed Hussain, for joining us and for breaking down those developments for our viewers. We are now shifting our focus to Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay's wife, Sangeeta,